students. Today we will revise the whole chapter again. Cell, the fundamental unit of life. Okay, these are my revision videos. Then after that, after the complete revision of this chapter, we will start the next one. कहाँ छोड़ा था हमने? Tissues. Okay, so these are the revision videos, revision classes. Okay, cell, the fundamental unit of life. Why cell is called the fundamental unit of life? As you know, each organism, or either it is living or non-living, there is a one basic unit. Okay, अगर हम बात करें houses की, so brick is the base of a house. So bricks are the basic unit of a whole wall. Just like that, cell is the fundamental unit of a living organisms. Okay, so as it is a revision class, in short I'll give you all the points related to the all topics. Okay, so cell is called the structural and the functional unit of life. Why? Because all the metabolic activities like respiration हो गया, digestion हो गया, excretion हो गया, takes place inside our body. But कहाँ होता है? Inside the cells. We are made up of millions of cells. Even इतना सा भी part of our body जो है, it is having now millions of number of cells are present. Is it clear? So cells are the basic unit of life. They are the structural, because हमारी body का structure cell से बना है, structural and the functional, all the functions which are the metabolic activities, which are the very important and the crucial activities for our life. Okay, just takes place with the help of a cell. Okay, so the next point is organisms. On the basis of cell की बात करें, on the basis of the number of cells, organisms are of two type: unicellular organism and multicellular organisms. Uni means single organisms जो single cell से बने, they are called the unicellular organisms. Organisms which are made up of more than one or two number of cells, they are called the multicellular organisms. Okay, this is my revision class. Again I am telling you, this is my revision class. Okay, so unicellular organism and multicellular organism. Now the types of the cells on the basis of the nucleus की अगर हम बात करें तो prokaryotic cell and eukaryotic cells. Pro, as मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको, pro means false, means for example bacteria cell, single celled organism. Okay, whose genetic material means nucleic acids, DNA और RNA. Okay, which carries the genetic information from the parents to the new offsprings. Means जिन organisms का genetic material DNA और RNA outer membrane से enclosed नहीं होता है cell के अंदर, having no nuclear membrane is there, so that type of cells are and comes under the prokaryotic cells. That type of cells are called prokaryotic cells. And the cells which are having, like the plant cell and animal cell की अगर हम बात करें तो जिनमें nucleus genetic material is enclosed within a outer covering, means when the nuclear covering is present, they are the types of eukaryotic cells. They are called eukaryotic cells. And the examples here, the prokaryotic cells, इसका example हम लेते हैं, bacterial cell is the example of prokaryotic cell, and the example of eukaryotic cells are plant cell and animal cell. Okay, plant cell and animal cell. So some differences are there. If the question comes, just write a question, write 5 differences between prokaryotic and eukaryotic cell and write down it here for your revision only. Okay, next, plant cell and animals. There are so much differences in between the plant cell and animal cell की बात करते हैं तो उनमें भी काफी सारे differences होते हैं, but उनको हमने eukaryotes में इसलिए रखा है only just because of their genetic material is enclosed within a nuclear membrane. Okay, so next is plant cell and animal cell. Now what are the differences between plant cell and animal cell? Write the next question, write 5 differences between plant cell and animal cells. All the 9th comers सबको पता है, in the 8th standard हमने already ये सब पढ़ा हुआ था. Write 5 differences between the plant cell and animal cell. Okay, so plants are generally fixed होते हैं एक जगह पे, animals are generally, animals motile होते हैं, they can move from one place to another. यहाँ पे हम उनके बेसिक यूनिट की बात करें, सेल्स की बात करें, सो प्लांट सेल्स की बात करते हैं हम. प्लांट सेल एंड एनिमल cell. Okay.
So one main difference between plant cell and animal cell is that कि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के एक जो मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, उस कवरिंग के अलावा वन एक्स्ट्रा लेयर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. सो सेल वॉल इज प्रेजेंट. एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. इन प्लांट सेल्स किसकी प्रेजेंस होती है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. if they are present तो उनकी साइज स्मॉलर होगी, और मे बी दे आर एब्सेंट बट लार्ज साइज वैक्यूल्स नहीं होते. इज इट क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की अगर हम बात करें, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस पेरिफेरल प्रेजेंट होता है, मीन्स इन द साइड रीजन्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट है. अगर लार्ज साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट है मीन्स न्यूक्लियस कहाँ होगा? पेरिफेरल रीजन में होगा, साइड रीजन में होगा. बट इन एनिमल सेल न्यूक्लियस जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? In animal cell nucleus is generally present in the center of the cell. Okay, so in plant cell and animal cell so many differences are there. Centrioles की बात करें तो centrioles one of the cell organelle की बात करते हैं. In animal cell present at all the time, but in animal cell centrioles are present, but observed कब होते हैं? Only at the time of cell division. We can't observe them the whole time. Okay, only during the cell division we can observe the centrioles, which plays a major role in the cell division. Okay, so next other points you can write it your own. Differentiate between plant cell and animal cell. Now come to the basic points related to a cell. Okay, this basic points related to the cell. Basic structures of cells. Cells की अगर हम बात करें main parts of the cell, again we'll start with the membrane. Cell membrane और plasma membrane. Okay, cell membrane or plasma membrane we can say. The second important part of the cell is nucleus controlling center. In our body, our brain acts as a controlling center. Just like that, in a cell, nucleus acts as a controlling center. And in the third case की अगर हम बात करते हैं, so in the third case, cytoplasm. Third is cytoplasm. So in cytoplasm, various cell organelles are present. साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाई करती हैं इन साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स. ओके, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट, इन प्लांट सेल्स बिसाइड्स द सेल मेम्ब्रेन वन एक्स्ट्रा लेयर इज प्रेजेंट विच वी कॉल सेल वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स में. प्लांट्स सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इट इज एब्सेंट. ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे इन शॉर्ट. ओके,